So this has started recording. Okay. So now what we need to do is uh, we'll open our browser like Google Chrome and open this website scratch.mit.edu. So this website scratch.mit.edu is basically a scratch portal for you. You can work on scratch on this website. आप लोगों को scratch पे कोई भी काम करना है आप यहाँ पे डायरेक्टली बड़े आराम से कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको दो बड़े बटन्स नजर आ रहे हैं. You can see two big buttons here. First says start creating, the other one says join. I hope that you can see my screen. Okay. So the first button here says start creating and the other one says join. So once you go to start creating, तो start creating का मतलब है कि आपके सामने एक स्क्रैच विंडो ओपन हो जाएगी और आप उसके ऊपर कोड बना के कोई गेम या कोई एनिमेशन बनाना शुरू कर सकते हैं. बेसिकली उसी तरह की जिस तरह आप स्क्रैच ओपन करते हैं अपने पीसी में, तो वो भी इसी तरह से ओपन होता है और आप इसके ऊपर नाउ दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट working on your animation or working on your game. So these tutorials are very important. They are very fun to understand. They help you to understand how your things would work. Okay, so you can always take help from them. Here is this button for the tutorials. You can try to see what tutorials are there and you can just try to copy the tutorials given in there. यहाँ पे जो भी tutorials आपके पास हैं, you can start working on these things. So these tutorials are here. You can take help from them. So the next thing that you need to do is join Scratch. Okay? As you could see on the very first page of Scratch website was that they told you, they asked you to join. So pressing this button, you can join and create an account on Scratch. What happens when you create an account on Scratch? That is a question that you should be able to answer. आपको पता होना चाहिए कि Scratch पे account बनाने से होता क्या. अच्छा, मैं आपको explain कर देता हूँ. स्क्रैच पे अकाउंट बनाने का मकसद ये होगा कि जब आप स्क्रैच पे अकाउंट बना लेंगे तो अभी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट गेम्स वगैरह हैं जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट बच्चों ने बनाई हुई हैं, डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई. नॉट स्पेसिफिकली किड्स, इवन एडल्ट्स दे आल्सो यूज स्क्रैच. तो उन्होंने ये कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ गेम्स वगैरह बनाई हुई. इसी तरह you can share your projects, your ideas here as well. In order to share these ideas, what you need is you need a Scratch account. So in order to create a Scratch account, you need to click on join. जब आप join पे click करते हैं, so now you can start creating an account for yourself. First one, it says that create a username. You can write any. वहाँ पे तो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा. आपने scratch.mit.edu की वेबसाइट खोली. हेलो, आपने scratch.mit.edu ये वेबसाइट खोली है. scratch.mit अरे वहीं पे तो डाउनलोड है. बिल्कुल वहीं से डाउनलोड किया जी, जहाँ से आपने डाउनलोड किया वही वाली वेबसाइट. अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन का बटन नजर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन स्क्रैच नजर आ रहा होगा ऊपर. उमर आ रहा है. So you need to click on this one. उसके बाद you can start creating an account. You can choose a username of your own choice, create a password of your own choice, enter a password again of your own choice obviously, and then click on next. You can follow this process here to create an account on Scratch. Let's say that I type in Scratch Games 786, create a password, Scratch 123, and then I write again Scratch 123. Let's try to do next. Okay. I will show you all the steps, but I'm not going to create my account actually. Then it asks at which country do you live in. So you need to select Pakistan from here. You need to just scroll down to P.
P for Pakistan, MNOP. Yeah, that's it. Select Pakistan from the list and click on next. Now you have to tell your date of birth. You can tell your date of birth, whatever it is, let's say, and then you can select your gender, click on next, and then the last thing that you need is an email address. You can use your email address if you want, you can use your parents' email address if you want. If you would ask your parents to sit with you while you are creating this account, that would be better. Okay? Ask your parents to sit with you when you are creating this account, and that's better. So you need to create an account by entering an email here. Once you enter the email here, your account is going to be created. And as I have told you, I'm not going to create my account, but I would be just showing you the process to do it. The server is scratching its head. I can tell you server what. So now we need to start working on Scratch. You can open Scratch on your PCs like from here. This Scratch that you have downloaded and installed, if you do not have it installed, what you can do is open it here. Today we are going to work on one skill, and that is animating your name. So we are going to follow these tutorials here to see how to animate our name. Scratch to animate a name. It says that you can use Scratch to animate a name and bring it to life. So today what we are going to do is we are going to animate our own name. Change color, spin, row, or interact however you like. To get started, we'll pick a background. Okay, so the first thing that they are asking is that we should be picking up a background. So let's pick up a background. Picking up a background is not very difficult. What you need to do is go click on backdrops here, and then click on this button which says choose a background. So you can, I think that you have, okay, if you have opened Scratch, then it's fine. It's better, but if you haven't opened it, I would suggest that you should open Scratch and try doing it alongside when I'm doing it. Okay. I hope everyone can hear me. Sir, I cannot hear you. I hope that all of you have opened Scratch, right? Just tell me, have all of you opened Scratch? Hello? Hello? Don't you guys like to answer the question some of the times? Haan, Bajiha, Umar. Hello? Have you guys opened Scratch? Yes. Yes, Oh, sir. no. No. It's If you still have, loading still. okay, okay. But you can open it on the website like I have opened it on scratch.mit.
I'm opening in the website. Okay. First thing that you need to do is select a background for your animation. So what you are going to do is click on choose a backdrop. It's very simple. You need to go here at this point, click choose a backdrop, and then there are a lot of backdrop options available. You can pick up any backdrop that you like. For example, let's say that I'm going to pick up this chalkboard, chalkboard. Okay. So I have opened this chalkboard here. I would try to animate my name on the chalkboard. So that's why I have opened it. Now I need to delete this character. I have deleted it. Now let's see what what we need to do next. So now we are going to pick our letters that we need. So as I'm going to, let's say, as I am going to basically animate my name, so I'm going to pick letters for my name. So I'll go to choose a sprite. In order to select the letters, what you need to do is click on this cat icon here, which says choose a sprite. When you would open that, scroll down towards the bottom and you would see alphabets. You can pick up any of the alphabets that you like. There are three types of alphabets. First are these orange ones, then you have these blue and white, and then you have these green and white, which can change their colors also when needed. These ones also you would see they do not have other sprite options. Same is the case with this for these ones, but we can pick up anyone that we want. So I'm going to first select O here. So this is my first character. I need to tell where it should be when I start this. So I am going to ask it to go to this position whenever I start that. Okay. So it's very simple. No. All we need is now keep on adding the characters that we want. So the first character we have added here, its name is O, and I would want it to be here whenever we start this one. We need to initiate this when let's say the flag is clicked. So we are going to say when flag clicked, and this is going to start. Okay, so whenever you are going to click the flag, this object is going to come up here. Not only come up here, it should actually show here. So I will go to looks and click on show so that this character shows here and does not go anywhere else. The next thing that you need is another all the characters, all the letters of your name. So I am going to choose another sprite, choose the other character. Other character, let's say, would be M for my name. Umar is my name, so I'm going to pick up M, and I'm going to pick up this M now. Then I need an A, so I'll scroll down, pick up that A. Sir, I cannot understand. So you are just writing alphabets of your names, nothing else. I'll show you how to do that once again. Okay. So what I'm doing is I'm arranging all the letters of my name first. Okay. So my name is Umar and it has four letters. Let's say O, M, A, and R. So I need the last character. So in order to keep all my name characters here, what I am doing is I am clicking on this choose a sprite, scrolling down and choosing the character that I like, that I need. So I have picked up all four letters for my name and I feel that they are a little bigger, they should be a little smaller, right? My name should fit in here. So for that, I think that these letters are a little big. I can change their size, make it 80. This one also 80. Let's make this one 80 as well. And this one 82.
So now I have my 4 characters that I'm going to use to animate my name in Scratch. Okay. So let's say that I have currently done only one thing, that I have written my name on Scratch right now. Is that right? What have I done? I have picked up a background. So let's recap what we have done so far. We have picked up a background, right? It can be any background that you want, but I have picked up this chalkboard. So I have picked up one background right now. And then after that, I have picked up the name characters, name alphabets, and I have arranged them. That is it, what we have done so far. We have not done any coding part so far. So far, only what we have done is, only thing that we have done is that we have picked up the characters that we need, nothing else. We have selected the background, that was the first part. We have taken out the names of our, the alphabets of our name, that was the second part. We haven't done any coding yet, so let's start coding सर now. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज कम आ रही है? अब ठीक आ रही है? हेलो, अब आपको आवाज ठीक आ रही है बेटे मुस्तफा? Yes. ओके, गुड। अच्छा, देखिए अभी हमने किया क्या है, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ 2 काम किए। पहला काम हमने ये किया कि हमने एक बैकड्रॉप सिलेक्ट किया ताकि हम अपनी एनिमेशन तैयार करने के लिए बैक पे जो चीज आनी है, जैसे आनी है उसको ले आए। तो हमने एक बैकड्रॉप ले लिया, मुझे अच्छा लगा ये बैकड्रॉप, चॉक बोर्ड वाला, ब्लैक बोर्ड वाला, तो मैंने वो पिक कर लिया। अगर आपको कोई और बैकड्रॉप अच्छा लगता है, कोई और बैकड्रॉप पसंद है, तो आप वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगला काम ये किया कि मैंने अपना नाम लिखने के लिए अपने नाम के सारे अल्फाबेट्स को यहाँ से जाकर सिलेक्ट किया, चूज अ स्प्राइट से। ठीक है, एज अ स्प्राइट, मैंने अपने नाम के कैरेक्टर्स सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव डन सो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? उसके बाद अब हम करेंगे इनको थोड़ा सा कोड करेंगे, इंटरैक्टिव बनाएंगे, एनिमेट करवाएंगे। एनिमेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन कैरेक्टर्स को बताते हैं कि जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे एनिमेशन, तो इन ऑब्जेक्ट्स, इन सारे लेटर्स को कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो उसके बताने का तरीका है गो टू। तो हम लोग सिंपली काम शुरू करते हैं कोडिंग के साथ, फ्रॉम द मोशन ब्लॉक। आपने हर कैरेक्टर के लिए ये गो टू एक्स वाई वाला ब्लॉक उठाना है और इसे यहाँ पे लाके रख देना है। एम के लिए भी इसी ब्लॉक को उठाना है, देन फॉर ए, देन फॉर आर। इससे होगा क्या? ठीक है, इन ब्लॉक्स से क्या होता है? इन ब्लॉक से ये होता है कि ये आपके कैरेक्टर को एक सर्टेन पोजीशन पे फिक्स करके रखना है। लाइक अभी आपके पास ये ब्लैक Sir, बोर्ड का I एरिया आ cannot रहा है। hear you. यू कांट हियर मी वजीहा? Now I can hear you. You can hear me now. Okay. So why are we using this? Like मैंने सारे letters के साथ what I have done is I have chosen this go to XY. ये क्या काम करेगा? This code is going to fix my characters where I have placed them. जहां पर भी मैंने उन्हें रखा है वहां पे इनको फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इस O को कहीं पे भी मूव कर देते हैं गलती के साथ, लेट्स से, तो जब भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सेम इज द केस विद एम, ओ एंड आर। अभी ठीक है ना, रैंडमली हमने कहीं पर भी इनको रख दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही हम फ्लैग प्रेस करेंगे, ठीक है, सारे इवेंट्स को फ्लैग प्रेस के साथ हम लोग इनिशिएट कर देते हैं कि जब भी फ्लैग प्रेस करें ये सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पर पहुंच जाएं। ये कैरेक्टर भी फ्लैग प्रेस करने पे अपनी जगह पर आ जाए, ये कैरेक्टर फ्लैग प्रेस करने पर अपनी जगह पर वापस आ जाए, और ओ फ्लैग प्रेस करने पर ओ की जगह पर वापस आ जाए। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं फ्लैग प्रेस करूंगा ये सारे कैरेक्टर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? अच्छा, अब इसी के लिए हम गो टू की बजाय यूज करेंगे ग्लाइड टू। क्या यूज करेंगे? ग्लाइड टू। Right. दिस इज ग्लाइड टू। ठीक है, ग्लाइड टू, ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स वाई। सिर्फ आप इस वन फ्लैग क्लिक के साथ कि ग्लाइड टू
को प्लेस करते जाएंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, गो टू वाले को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे ग्लाइड टू लगाते जाएंगे। ठीक है, गो टू वाला ब्लॉक आपने रिमूव कर देना है और ग्लाइड टू का ब्लॉक उसकी जगह पे लगा देना। रिमूव दिस गो टू ब्लॉक एंड ऐड दिस ग्लाइड टू ब्लॉक इंस्टेड। रिमूव द गो टू ब्लॉक एंड ऐड द ग्लाइड टू ब्लॉक है। अभी दोबारा से अपने कैरेक्टर्स को आगे पीछे हम छेड़ देते हैं, किसी जगह पर भेज देते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में कर देते हैं। ठीक है, और अब चेक करते हैं कि जब हम फ्लैग प्रेस करेंगे तो क्या होगा। अभी मैं फ्लैग प्रेस करूंगा तो ये सारे कैरेक्टर्स दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? हेलो वजीहा। सर आ जाएंगे। आ जाएंगे, बट पहले कैसे आ रहे थे कि पहले ही यहाँ से डिसअपियर होते थे और एक नई जगह के ऊपर अपीयर हो जाते थे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लाई करके अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं फ्लैग प्रेस करूंगा, सी हो रहा है ना? यस सर। सर अभी हम क्या करते हैं कि अभी अपने कैरेक्टर्स को किसी भी जगह पर रख देते हैं। जैसे ओ को यहाँ पे रख दिया, ए को यहाँ पे रख दिया, एम को यहाँ पे रख दिया और आर को यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे कि ओ पे जाएंगे और इसका गो टू ब्लॉक उठा के यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए। दूसरा वाला एम पे जाएंगे और उसका वाला गो टू ब्लॉक उठा के यहाँ पर लगा देंगे। ए पर जाएंगे और उसका वाला गो टू ब्लॉक उठा के यहाँ पे लगा देंगे। आर पे जाएंगे और उसका वाला गो टू ब्लॉक उठा के यहाँ पे दोनों के दरम्यान में लगा देंगे। अभी फ्लैग प्रेस करते हैं, ठीक हो गया। अब दोबारा एक बार और फ्लैग प्रेस करते हैं। ठीक है, अब आपका नेम क्या हो रहा है? एनिमेट हो रहा है। ठीक है, अभी आपकी हाफ एनिमेशन कंप्लीट हो गई। क्या आपको ये एनिमेशन अच्छी लग रही है? इसमें बैक पे कोई म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा तो do you think that this animation is नो fine? सर। No music is being played. So let's try to play some music also. Okay, म्यूजिक प्ले करने के लिए आप साउंड्स पे जाएंगे। चूज अ साउंड जो आपको पसंद है। लूप्स पे जाते हैं। किसी साउंड की आवाज आ रही है आपको? मुझे तो नहीं आ रही। साउंड्स प्ले करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस साउंड्स वाले बटन पे जाना है और साउंड स्टार्ट करना है अंटिल वी आर डन। ठीक है, लेट्स से कि हम स्टार्ट करेंगे साउंड स्टार्ट पे और एंड पे कर देंगे स्टॉप ऑल साउंड्स। ठीक है, कौन सा साउंड प्ले करना है उसके लिए साउंड सेलेक्ट करते हैं और साउंड्स में जाके उस साउंड्स को प्ले करते हैं। सो दिस साउंड इज काइंड ऑफ फाइन। आप लोगों को आवाज आ रही है साउंड की? आई गेस नहीं आ रही होगी। अब देखें, अब आएगी आपको आवाज। अभी आपको साउंड की आवाज आ रही है? वजीहा, मुस्तफा, उमर, यस यस सर, आई कैन हियर यू। you can hear the sound. No, not me, actually this sound.
Yes, I can hear it. You can Sir, hear I this can sound. hear this. Yes, Okay, sir. you can hear this sound. So abhi let's say कि when I play the flag button, when I click the flag button, what happens? ये तो बहुत जल्दी से खत्म हो गया, बहुत जल्दी से खत्म हो गया ना, बहुत जल्दी से खत्म हो गया, बहुत जल्दी से खत्म हो गया। तो हमें इसे जल्दी से खत्म नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली थोड़ी ज़्यादा देर के लिए प्ले करे। अच्छा, इसे ज़्यादा देर के लिए प्ले करने के लिए हमें अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ाना पड़ेगा। एनिमेशन का टाइम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर रिपीट के प्रोसेसेस लगा सकते हैं। ठीक है, या फॉरएवर के प्रोसेस फॉरएवर के प्रोसेस लगा सकते हैं। जिस तरह इसके ऊपर मैं फॉरएवर का प्रोसेस लगाता हूँ इस वाले के ऊपर कि ये कंटिन्यूसली अपना कलर चेंज करता रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लुक्स पे जाऊँगा, लुक्स पे जाऊँगा एंड देयर इज दिस ऑप्शन व्हिच सेज change color effect by 25. So let's see what happens with this one when I start this. बहुत तेजी से कलर चेंज हो रहा है ना। हम इस कलर चेंज को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। स्लो करने के लिए हम कंट्रोल्स पे जाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये कलर चेंज करने के बाद वेट करे, लेट्स से 0.5 सेकेंड्स या 1 सेकेंड वेट करे। तो ये अब इस तरह से कलर चेंज करेगा। फाइन फॉर अस, फाइन फॉर अस। अब एम के लिए करते हैं, क्या करना चाहिए। एम के लिए भी हम इसी तरह से फॉरएवर लूप लेंगे और इसको चेंज, का कलर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे कि ये लुक्स पे जाए या टर्न करे, लेट्स से टर्न, ये लुक्स पर जाए और टर्न करे अपने आप को 15 डिग्रीज। उसके बाद दोबारा टर्न बैक करे 15 डिग्रीज, और इस सारे प्रोसेस में इट शुड वेट फॉर सम टाइम which is 0.2 seconds, let's say. This is how this is going to behave. सर स्प्राइट छोटा कैसे होगा? अच्छा, स्प्राइट छोटा करने के लिए यहाँ पे साइज का बटन है, आप इस साइज के बटन को यूज करोगे। ठीक है, सर जी। स्प्राइट को छोटा कैसे करेंगे? स्प्राइट को छोटा करने के लिए बेटे ये यहाँ पे साइज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, साइज। ये देखें, यहाँ से साइज कम करेंगे तो आपका स्प्राइट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ चेंज समथिंग फॉर ए ऑल्सो। ए के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे ग्रो और श्रिंक करेंगे। क्या करेंगे, ग्रो एंड श्रिंक। ग्रो एंड श्रिंक करने के लिए भी आप यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक लेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रो करने के लिए यू आर गोइंग टू यूज चेंज साइज बाय 10, एंड उसके बाद डुप्लीकेट करें और कहें चेंज साइज बाय -10। और जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट पे इसका साइज शुड बी 80। और ये तो दोनों चेंज साइजेस हैं, इसको विजिबल रखने के लिए वी शुड ऐड सम वेट बिटवीन। 0.2 का वेट डालते हैं। 0.2 का वेट काफी कम है, 0.4 का डाल।
So this is how this is going to work. And last thing is R. R के लिए हम क्या करते हैं कि R को भी हम इसका कलर इफेक्ट चेंज करते हैं। ये कलर इफेक्ट चेंज करने के लिए फिर उसी तरह से हम इसको करेंगे रिपीट। रिपीट करेंगे इसे 40 टाइम्स। करेंगे ये कि इसका कलर चेंज करेंगे। लुक्स पे जाएंगे और बोलेंगे चेंज कलर इफेक्ट बाय। अच्छा, अब इस कलर में आपके पास और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, फिश आई, वर्ल, पिक्सेलेट, मोज़ेक, brightness. So I'm going to use brightness, and for that 20, duplicate, -20, और इसके दरम्यान में I would add some weight. वेट ऐड करने के लिए आई एम गोइंग टू गो टू वेट और यहाँ पे वेट डिफाइन करूंगा 0.5। सो नाउ फर्स्ट वाले में स्टार्ट साउंड की जगह पे लेट्स यूज प्ले until done and then like that. ए का साइज हमारा बढ़ के 150 हो गया है। देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू। और इसी तरह एम की डायरेक्शन भी देखेंगे तो ये भी काफी खराब हो गई हुई है। इन चीजों को कैसे छोटी छोटी चीजों को फिक्स करना है आई विल शो दैट टू यू इन टुमारोज लेसन। अभी का लेसन आप अभी का दिस इज द लेसन दैट यू हैव। ठीक है, आई विल शेयर द कोड विद यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस। इट्स अप टू यू कि आप उसे खुद से किस तरह से कितना अच्छा एनिमेट करते हैं, बट यू कैन फॉलो दिस कोड फॉर दैट फॉर हेल्प इन दैट रिगार्ड। ठीक है जी। If there is anything that you guys want to ask that you don't understand, you can ask right now.